Assalamu alaikum and welcome to the 35th session of Lums Live. अगर आपने हमारे पिछले कोई सेशन मिस किए हैं, they're on YouTube, they're also on Facebook. Look them up. We've had some fantastic conversations. और आज की जो conversation है, वो भी निहायत दिलचस्प होने का वादा है. बहुत अरसे से एक गुफ्तगू हो रही है कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए माशरे में. अब जब कोविड का मसला एक आया है, तो हम ये सोचते हैं कि जब टर्मोइल होता है, जब क्राइसिस आता है, उसमें क्या रोल हो मीडिया का. तो आज हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ मीडिया इन टाइम ऑफ सोशल टर्मोइल. हमारे जो पैनलिस्ट हैं आज, उनका पेश की बहुत बहुत शुक्रिया. इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, वी हैव अंबर रहीम शम्सी विद अस. शी इज अ मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हु होस्ट्स सवाल विद अंबर ऑन समा टीवी. आप में से बहुत सौ ने देखा भी होगा. थैंक यू अंबर फॉर जॉइनिंग अस. वी हैव असद हाशिम. ही इज द ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर अल जजीरा English. Thank you so much, Asad. And we have Sadaf Khan, who's the co-founder of Media Matters of Democracy. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अंबर, सबसे पहले मुझे बताइए, मीडिया किस जानवर का नाम है? अगर 3-4 न्यूज चैनल्स, 1-2 रेडियो चैनल्स और एक अखबार निकाल दें, तो क्या मीडिया खत्म हो जाएगा? क्या इसके अलावा भी ये जो मीडिया का जानवर है, उससे बहुत बड़ा है? अब आप जानवर आपने कह दिया, तो आप मीडिया को गाय से अगर हम तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि गाय के बहुत सारे हिस्से तो जो खाए जाते हैं, सब कुछ ही खाए जाते हैं ना. पाए भी खाए जाते हैं, हाइंड लेग्स, एवरीथिंग इज ईटन. सो मीडिया एक बहुत, इट्स अ बिग बीस्ट. इट इज एक बहुत बड़ा जानवर है. और अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसको एक तरह से देखते हैं कि मीडिया है, वो गाय है. ये नहीं सोचते कि उसकी स्टेक भी बननी है, पसंदे भी बन सकते हैं, उसकी पुलाव भी बन सकता है, पाए भी बन सकते हैं, उसका मगज भी बन सकता है. तो मीडिया को लंप टुगेदर किया जाता है. अब आप देख लें, आपने 2-3 तो इनकी निशानदेही कर दी ना. अखबारात भी हो गए, उसमें ऑनलाइन अलग हैं, उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलग है, उसमें कई किस्म के चैनल है जिनके कई किस्म के एजेंडा है. उसमें उर्दू अखबारात है, उसमें अंग्रेजी अखबारात है, रेडियो है, उसमें अब कुछ पॉडकास्टिंग भी शुरू हो गई है जो बहुत महदूद है और उसकी ज्यादा ऑडियंस नहीं है, लेकिन वो भी है. सो मीडिया एक, उसको मोनोलिथ की तरह, एक गाय की तरह हम, या मुकद्दस गाय तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गाय की तरह हम नहीं सोच सकते. मीडिया इज मेनी एनिमल्स इन अ जू. इट इज लाइक दैट. और इस पे अक्सर मैं सहाफी हूँ, तो मुझसे सवाल ही पूछा जाता है, अच्छा मीडिया आजकल कर क्या रहा है? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो आई रिप्रेजेंट वन शो ऑन अ स्मॉल चैनल. सो I think पाकिस्तान के जो मीडिया एवोल्यूशन हैज बीन फैसिनेटिंग, क्योंकि हम ज़ाहिर आमरीत के अदवार से भी गुजरे हैं. सेंसरशिप भी बहुत रही है, कम सेंसरशिप भी रही है, लाइवली रही. और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो मीडिया की आज़ादी है, उसके जो उतार चढ़ाव है, वो तो उस पर हम मजीद भी बात कर सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि लोगों को आज़ादी चाहिए. वो आप बोतल में दोबारा से बंद नहीं कर सकते. अगरचे हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2-3 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ सेंसरशिप में इजाफा हुआ है, कुछ मुश्किलात का शिकार रहे हैं, लेकिन उसका फिर मुतबादल आपको नजर आता है, वो सोशल मीडिया नजर आता है. तो वो भी एक मीडिया की किस्म है जिसमें लोग अपने आप को सहाफ़ी भी समझते हैं, व्लॉगर्स भी समझते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी समझते हैं, खबरें भी देते हैं, वो गलत भी हो सकती हैं. सो इट्स अ जू. असद की जो जू है, जिसका नाम मीडिया है, जिसकी तफसील से अम्मा ने बात की, उन्होंने कहा कि आमरीत में एक ज़माने में बहुत कदगम थी मीडिया के ऊपर. आई रिमेम्बर द 70s, खास तौर पे बहुत सख्ती थी. एंड देन सरप्राइजिंगली अनदर डिक्टेटर केम इन द अर्ली 2000. मीडिया आज़ाद हुआ पहली दफ़ा, और फिर allegedly मीडिया कंट्रोल से बाहर हुआ. और सरप्राइजिंगली ये पहली बार सुनने में आया, कम से कम मेरी जिंदगी में, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जो अंबर ने इशारा भी किया कि 2-3 साल से मीडिया के ऊपर अब जरा सी और सेंसरशिप है. अच्छा, अब वो दिखती नहीं है, पहले कम से कम दिखती थी वो. इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया या कितना आजाद है, और कोई अकाउंटेबिलिटी होती है सेंसरशिप के बाद? कोई रूल्स हैं सेंसरशिप? So I think you hit the nail on the head right there, is that it's not as visible now as it used to be. पहले तो आपको पता होता था ना, ज़िया के दौर में आपको पता था कि वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छप गया है, जिसका मतलब है कि आइटम रिमूव हुआ है. तो पब्लिक को भी पता है, जब वो अखबार पढ़े, कि अच्छा कोई ऐसी चीज थी जो कि डीम्ड अनवर्दी ऑफ पब्लिक कंजम्पशन. ये मैंने जब एक स्टोरी की थी इसके बारे में, एक इन्वेस्टिगेशन किया था अबाउट ईयर एंड हाफ अगो, और उस वक्त मैंने बहुत से पाकिस्तानी अखबारात के एडिटर से बात की थी, जर्नलिस्ट से बात की थी, इंडिपेंडेंट सहाफियों से बात की थी, टीवी जर्नलिस्ट से बात की थी. और एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि जो अभी सेंसरशिप हो रही है, वो एक इंटायरली डिफरेंट मोड एंड मच मोर डेंजरस बीस्ट है. क्योंकि वो जिस तरह से हो रही है, वो एक अंडर द टेबल कोअर्जन के थ्रू हो रही है, वो बिल्कुल विजिबल नहीं है.
usko it is being done using financial means and being using other means as well. So देखिए पहले पाकिस्तान में जब मैंने सहाफत शुरू की थी 2007-8 में, तो जब आप कोई रेड लाइन क्रॉस करते थे तो आप या तो अगवा हो जाते थे या आपको मार डाल दिया जाता था, आपको डायरेक्ट थ्रेट्स मिलती थी कम से कम. These were the three things that would happen and that's about it. अब उनको समझ में आ गया है कि ये एक अच्छा, एक तो ये बहुत बुरी हेडलाइन जनरेट करता है कि पाकिस्तान में सहाफी जान से मार दिए गए या मर्डर कर दिए गए. तो अब क्या करते हैं that they actually work in collusion with the man, in my experience and from what I have been told by very senior TV journalists, is that they work in collusion with management by twisting their arms and making sure कि देखें अच्छा सही है आप चला दे स्टोरी, बेशक हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने स्टोरी चलाई तो चैनल जो है वो बंद हो जाएगा, या तो पेमरा बंद कर देगा using the पेमरा ordinance which is extremely draconian and has a very narrow definition of what freedom of speech is. Or we will subject you to financial penalties, या फिर mysteriously आपका चैनल केबल से बस गायब हो जाएगा, ना ही बैन हुआ है ना ही कोई पेमरा का ऑर्डर है, लेकिन सडनली जो है जियो या तो आता नहीं है या नशर नहीं हो रहा, या फिर वो चैनल 3 से वो चैनल 74 पे चला गया जहाँ पे किसी को पता नहीं. तो बहुत से अब ऐसी चीजें हो रही हैं and it has now become, because it has been going on for about a year and a half or so, I would say about 2 years maybe, it has now become automatic. Self censorship is now the mode, because reporter को पता है कि अगर मैं ये स्टोरी फाइल करूंगा तो not only will it not get published, लेकिन मुझे फिर मैनेजमेंट से कॉल आएगी, मुझे फिर उस डब्बे में डाल दिया जाएगा कि मैं एक प्रॉब्लमैटिक रिपोर्टर हूँ, कि मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ. तो अब जो है सहाफी, ज्यादातर सहाफी पाकिस्तान में are not even filing the stories, and this to me is the most insidious form of censorship. And self-censorship, I also do want to just speak for a moment about this. The term self-censorship tends to have a very negative connotation. It tends to have a connotation कि journalist अपने आप को censor कर रहा है, journalist अपने आप को रोक रहा है. It's that you're being coerced. It's not that you're part of it, right? You're being compelled to self-censor. I think that's also another important thing to keep in mind. उसके अलावा, obviously, I'm not going to say that there are not obviously problematic journalists or problematic journalism happening in Pakistan. बिल्कुल हो रहा है, across the board हो रहा है. लेकिन उसको डील करने के लिए जो एक्चुअल सॉल्यूशंस हैं वो बिल्कुल नहीं अपनाए जा रहे, और जो बैड जर्नलिज्म दैट इज कंसिडर्ड प्रो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली 100% allowed, and bad journalism that is considered to be in any way against the government or the military is, completely squashed and now almost doesn't exist. सदफ, मैंने बिल्कुल इस आर्गुमेंट को उल्टा भी देखना है. एक लफ्ज इस्तेमाल किया असद ने, उनको पता चल गया, पता नहीं उन कौन है, बहरहाल हम सबको पता है कि उन कौन है. मुझे ये पूछना है आपसे कि अच्छा एक और काम करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल ऑफ अस लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री. एट द एंड ऑफ द डे वी वांट द कंट्री टू फ्लरिश. अब हमने ये सोचा या वो सोचा वो सब ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वांट फ्रीडम एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड ऑल ऑफ दैट. मेरा सवाल आपसे ये है कि मीडिया का नेशन बिल्डिंग में या स्टेट बिल्डिंग में भी कोई रोल होगा, और अगर वो है तो क्या मीडिया का कुछ हिस्सा उसको भी पूरा कर रहा है? देखिए, आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट आई थिंक जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो मीडिया का एक्चुअली रोल क्या है उसके ऊपर आता है. एक हमारे माशरे का बहुत बड़ा सेगमेंट है जो नेशन बिल्डिंग को पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के साथ सिनर्जाइज करके देखता है कि नेशन बिल्डिंग का शायद वाहिद तरीका ये है कि मुल्क के बारे में अच्छी बातें की जाएं, हुकूमत को क्रिटिसाइज ना किया जाए, और एक एसेंशियली एक मोरल बिल्डिंग वाली जो एक्टिविटी है वो क्रिएट की जाए मीडिया के जरिए. जो हम जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो नेशन बिल्डिंग को इक्वेट करते हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से. और जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होगी तो हमेशा जो स्टोरीज निकल के आएंगी वो क्रिटिकल होंगी, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग होंगी, वो उन खामियों की निशानदेही कर रही होंगी जिनको बेहतर करके नेशन बिल्डिंग की जा सकती है. अभी आप असद से जो सवाल कर रहे थे कि जो आपको सेंसरशिप नजर नहीं आती, आई थिंक ये भी काइंड ऑफ उसकी कंटिन्यूएशन है. इसमें मुझे लगता है कि हमारी जो अवाम है और जो मीडिया के क्रिटिक्स हैं वो ऑफन लिंक कर देते हैं कि मीडिया पे किस लहजे में बात हो रही है, मीडिया पे कितनी क्रिटिसिज्म हो रही है, वो शायद मीडिया की आज़ादी का पैमाना है. लेकिन अगर आप एनालाइज करें तो मीडिया के ऊपर कितनी स्टोरीज ऐसी आ रही हैं जो किसी करप्शन को पिन पॉइंट कर सकती हैं, कौन सी ऐसी स्टोरीज मीडिया पर आ सकती हैं जो गवर्नेंस के डायरेक्ट इश्यूज को पिन पॉइंट कर सकती हैं. ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी इंफॉर्मेशन की हमें एक्सेस नहीं है, और जब एक्सेस मिल जाती है तो हम उन्हें नहीं कर सकते. सो जो हमारा मीडिया का महवर है गुफ्तगू का मीडिया के ऊपर, वो पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल कंडक्ट को, उसको क्रिटिसाइज करने में रह जाता है, जिसकी इवेंचुअली शायद हमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं है. और जो एक्चुअल सिस्टमैटिक इश्यूज हैं उनको हम रेड लाइंस के पीछे ही देखते हैं और उनको हम नहीं ला सकते.
تو یہ سچ ہے کہ میڈیا کا شاید جو رویہ ہے وہ ہارش ہے, جو کرٹیسزم ہے وہ اس لہجے میں ہے جو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آزادی ہے کہ کچھ بھی بول دو. I don't think that's a good thing. اس میں ایتھکس اور پروفیشنلزم کا معاملہ ہے, لیکن جو ایکچوئل جرنلزم ہے اور جو ایکچوئل جرنلسٹک سٹوریز ہیں جس پہ میڈیا کرٹیسائز ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آتی, وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہ جو نیشن بلڈنگ کا آپ نے کانسیپٹ کا تذکرہ کیا, ان کو سامنے لانا پیٹریوٹزم اور نیشنلزم کے اگینسٹ تصور کیا جاتا ہے. کہ اگر یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئیں اسپیسیفکلی ود میڈیا, جیسے ہم کہہ رہی تھی کہ بہت اب وائڈ ہو گیا ہے, جب آپ کی باؤنڈریز اس ٹرانسمیشن کی اکراس بارڈرز جا رہی ہیں, تو وہ جو اوتھینٹک جرنلزم تھی, جو جرنلزم ود ان جو ایک فورتھ پلر والا اور فورتھ اسٹیٹ والا معاملہ دیکھتے ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی والی جو بات ہوتی ہے, اس کو سم ہاؤ پاپولر نیریٹو میں نیشن بلڈنگ کے اگینسٹ ہم پراپٹ اپ دیکھتے ہیں. ایسا بالکل نہیں. آبویسلی میڈیا ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور ڈیموکریٹک ویلیوز بلڈ کرنے میں اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن وہ کردار ادا کرنے کے لیے بھی جو ایک ایکچوئل انڈیپینڈنس ہے, جو معلومات تک رسائی ہے, جو یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم سٹوریز پہ ایکچوئل رپورٹ کریں گے بجائے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس پہ رپورٹ کرنے کے, تو ہمارے اوپر کریک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن اور انٹیمیڈیشن نہیں ہوگی, تو ہی میڈیا وہ نیشن بلڈنگ کا صحیح کردار ادا کر سکتا ہے. امبر, اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آدھی آبادی کو تو پڑھایا نہیں, تو اس لیے اخبار میں آدھی آبادی تو پڑھ سکتی نہیں ہے. جو پڑھ سکتی ہے اس میں کتنے لوگ انگریزی پڑھیں گے, تو انگریزی کے اخبار بھی بالکل ایک چھوٹی سی ایک مائنورٹی رہ گئے. باقی پڑھنے کا شوق ویسے ہی ہماری قوم کو نہیں ہے, تو اخباروں کا امپیکٹ ریلیٹیولی کم ہے, لیٹس سے کمپیئر ٹو دا ٹیلی ویژن فار انسٹنس, جو شاید ہر گھر میں یا ہر تندور کے اوپر, ہر دکان کے اوپر ہوگا. تو ٹیلی ویژن از perhaps the biggest medium so to speak, which means شاید ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. And help me with this, and I'm focusing only on COVID-19 and the crisis. میں نے ساری نہیں دیکھی پریس کانفرنسز پی ایم صاحب کی, لیکن 2-3 دیکھی تھی جس میں وہ 10-15-20 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, سارے مختلف میڈیا ہاؤسز کے تھے, اینڈ وی ڈسکسنگ. سوری, ان میں سے ایک میں بھی تھی, ان میں سے ایک میں بھی تھی. شور. اب ظاہر ہے وہ اس وقت بریفنگ ہو رہی ہے اور کووڈ کی ہو رہی ہے, that's why we are here, that's why everyone is here. تو اب جس سے بھی کوئی جھگڑا ہے یا جو کوئی ایجنڈا ہے, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, باہر رکھتے ہیں, پر we are talking about COVID and we are talking about saving lives. So when the floor was open to questions, I could see many journalists جن کی کوئی پرانی ناراضگی ہوگی گورنمنٹ سے یا کوئی ایجنڈا ہوگا جو بھی ہوگا, and they didn't focus on COVID at all. So my question to you is, did media in general, was it successful in giving out the message کہ یار یہ کرنا ہے کووڈ میں, یا وہ کچھ اپنے ہی جھگڑوں میں پڑ کے رہ گئے, حکومت یہ کہہ رہی ہے اور ایک میڈیا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے اور فلانا یہ کہہ رہا ہے. Did the media fail there? I think اس میں آپ اس پہ میں دو باتیں اس پہ کہوں گی کہ ایک آپ کی بات درست ہے کہ وہ جو فوکس تھا اس میٹنگ کا, اس پریس کانفرنس کا, وہ کووڈ تھا. اور میں یہاں بھی بتا دوں کہ میں نے کووڈ پہ ہی سوال پوچھے تھے اور اس کے مجھے جواب بائی دا وے نہیں ملے تھے جو میں سوال پوچھ رہی تھی. سو یو کین اس سے بھی اندازہ لگا لیں. بٹ آئی تھنک ہے یہ کہ ایک آپ کی جو ایکسیس اور ٹرانسپیرنسی کی بات ہے, آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بھی ہو, وہ پریس کانفرنسز کرتا ہے اور وہ صحافیوں کو چپ بھی کروا دیتا ہے. اگر وہ یہ بھی سوال پوچھے, ایک جیسے صحافی نے ابھی حال ہی میں سوال پوچھا تھا, اس کو ایک ہی موقع ملا, اس نے کہا یہ میں موقع ڈھونڈتا ہوں, اس نے کہا آپ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں, تو اس نے تو ظاہر نظر انداز کر دیا, اس کو کٹ آف کر دیا اور کہا کہ مجھے دوبارہ موقع ملے گا, میں یہی سوال دوبارہ سے پوچھوں گا. So they have access to the president is my point here. یہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب who is generally much more accessible than previous prime ministers, میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں, لیکن جب بہت سارے ایشوز کراپ اپ ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ he is the center of all of this, تو پھر بہت سارے سوال ان سے بنتے ہیں. شاید کووڈ کے میں اپنے کولیگس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گی, کووڈ کے علاوہ انہوں نے بہت سوال پوچھے, اور یہ کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا تھا, یہ موقع بھی ان کو ملا تھا, ان کو فراہم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جتنے ایشوز ہیں وہ سب اس وقت اٹھا دیں. تو ان کو یہ موقع ملا اور انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا, جس پہ بہت زیادہ ظاہر ہے تنقید بھی ہوئی تھی انہی صحافیوں پر. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کووڈ پہ فوکس ضرور کرنا چاہیے, لیکن اگر زیادہ سے زیادہ اس قسم کی انگیجمنٹس اور انٹریکشنز ہو وزیر اعظم کے ساتھ, تو میرے خیال میں شاید ایک ایونٹ پر اتنا زیادہ شور نہ بچے. جہاں آپ کی کووڈ کی بات ہے, کچھ میں نے بھی سوال پوچھے تھے جن کا جواب مجھے نہیں ملا تھا, اور وہ کافی مجھے کوریدنا پڑا تھا اور 2-3 ماہ لگ گئے تھے. تو ٹھیک ہے, دس از اے گڈ تھنگ, انٹریکشن ضروری تھی. آپ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ وہ انٹریکشنز پھر رک بھی گئی تھی,
उससे ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्यों रुक गई थी. मेरे ख्याल में कि अगर कंटिन्यू होती तो इस किस्म की करप्शन नजर ना आती. तनाज़ा जो खड़ा हुआ था वो उन सवालात से था जिनका ताल्लुक कोविड से नहीं था. Okay, maybe the Prime Minister should have more press conferences. And other people would say, "Bhai, journalists हरकतें ऐसी करते हैं तो क्यों हम करें?" So, where does it end? But anyway, Asad, my question to you would be, पिछले 5-10 साल में जैसे अंबर ने कहा, मीडिया इतनी बड़ी एक जानवर है कि वो कोई एक तरफ से उसको पकड़ना नामुमकिन है. उसका एक नतीजा ये हुआ है जो शायद 15-20 साल पहले नहीं था, कि फेक न्यूज या मैन्युफैक्चर्ड न्यूज या बहुत सी अफवाहें निकल चुकी हैं जो काबू से बाहर हो जाती हैं. कोविड के 20 तरीके मैं बता दूं आपको ठीक करने के, जो अभी तक डॉक्टरों को भी नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मा और मेरी सास को पता है क्योंकि व्हाट्सएप आई थी या फेसबुक के ऊपर हमारी फुफो ने लिख दिया. इस किस्म के सिनेरियो में जहां पे there's such a bombardment of news, how does media hold on to its credibility, and is credibility actually a variable these days? I think that last question is the right way to put it. I don't think that, I have a very cynical and a very bleak view of this. Is I don't think that the public in general places a high value on the idea of truth in reporting Pakistan. I think that, and particularly this is it's a trajectory that we've been on for several years, for many years now, I believe. And हुआ क्या है, and this kind of relates to आपका जो सवाल अंबर को था, कि media जो है, it is now seen as not a accountability or transparency mechanism over the structures of power. Instead, it is seen as something that is actually a part of the structures of power. It is directly connected to them and is in fact influencing them in one way or another. And uske saath jo hua hai, conjoined with that, is the idea that all journalism is biased. All journalism is in some way specifically politically motivated, not biased towards, just say, for example, I might argue, or I might even accept that my journalism is biased towards human rights. I have a bias towards the idea of human rights. And that structures the way that I approach stories, and that structures the stories that I do cover. But in Pakistan, the bias is only and only ever looked at in terms of politics, and everything is reduced down to politics. So, for example, अगर मतियुल्लाह जान जो हैं, वो अगवा होते हैं एक स्कूल के बाहर से और उनको बीट और असॉल्ट किया जाता है और वो 12 या 13 घंटे के लिए गायब होते हैं और फिर वो वापस आते हैं. आप अगर इस स्टोरी को कवर भी करें तो यू आर नॉट बीइंग अक्यूज्ड ऑफ कि आपने इसके ऊपर तफ्तीश नहीं की है, आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आपने उनसे बात नहीं की. यू आर बीइंग अक्यूज्ड कि देखें आप एंटी गवर्नमेंट है, इसीलिए आपने ये स्टोरी की है. अगर आप प्रो गवर्नमेंट है तो फिर आप स्टोरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे. Everything is reduced down to these black and white issues. Now, in that, as you say, we're now in a realm where there's information freely available all over the place, and anyone can broadcast and anyone can create information or misinformation. अब इसके ऊपर भी मैं दो चीजें कहूंगा कि there's a difference between good journalism and bad journalism, and I think that's not the conversation we're having. The conversation we're having is about everyone just willy-nilly sharing everything without verification, and then it being echo chambered and broadcast or finding resonance based on the political leanings of the people who are sharing. Ab us situation mein, how does the media establish any kind of credibility at all? I think it's a very difficult question. I think in Pakistan right now, उनकी जो हमने बात की वो बहुत खुश होंगे अभी कि जो मीडिया है, इट्स आल्सो बिकॉज़ इट इज आल्सो अटैक्ड ईच अदर, राइट? सो इट्स नॉट लाइक द मीडिया ग्रुप्स हैव एवर स्टूड इन सॉलिडारिटी. जब 2014 में हामिद मीर पे अटैक होता है तो दूसरे चैनल्स ने ये नहीं कहा कि एक सहाफी के ऊपर अटैक हुआ है, हमला हुआ तो था ना, ही वाज शॉट 5 टाइम्स. ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि देखो हमें मार्केट शेयर मिल रहा है, अगर हम इन लोगों को नीचे जरा से ढकेलें तो लेट्स डू इट. So I think we're in a very difficult space right now, and I don't see a route towards better journalism happening. Not that it isn't actually occurring, but it is being drowned out by the noise, for sure. So the two similar questions, and then perhaps Amber can also respond to them. One is good or bad journalism. कहा असद ने, मेरे बुजुर्ग कहते हैं खोते घोड़े में फर्क. तो जब खोते घोड़े में फर्क ही नहीं को रहेगा तो घोड़े को फिर क्या जरूरत है कुछ करने की, फिर खोते ही ठीक है फिर. So good and bad journalism, when it sells, when people make money, when people make headlines, when people host shows, no offense to any current anchor, then why does one need to be credible or good? One just needs to sell oneself. So zurat kya credibility? That's one. Secondly, like Asad said, कि जब divisioning होगी within the media, which is understandable, और बजाय ये कि वो किसी मकसद से खड़े होंगे, हामिद मीर का इन्होंने मिसाल दी, जब वो तफरीक में ही पड़े रहेंगे कि हमारे 2 पैसे या हमारी टीआरपीज बढ़ जाए या हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए, how will media exert pressure and
I guess, improve democracy. How would they do that? So देखिए, in my opinion, all of these things kind of link back to कि आपकी मीडिया का इकोनॉमी का मॉडल क्या है. क्योंकि मीडिया को हमेशा मैं इस बात पे क्रिटिसाइज होता हुआ देखती हूँ कि बहुत कमर्शियल हैं, पैसे कमाने के पीछे पड़ जाते हैं, बट what we don't understand and what we are not thinking about, these are hundreds and thousands of people connected to an industry. बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनको पैसे मिलने हैं. जर्नलिज्म इटसेल्फ कोई सस्ता काम नहीं है. ये अभी सब ज़ाहिर है, आप फ़ोन उठा के वीडियोस बना सकते हैं, बट एज एन इंडस्ट्री जर्नलिज्म को चलाना, इट्स, आई डोंट नो कि मनी और बिजनेस को हम बैड वर्ड्स क्यों मनाते हैं. उसकी इम्प्लीकेशन बुरी आई है इस वजह से, बट उसकी इम्प्लीकेशन क्यों बुरी आई है? इफ यू लुक एट द लॉ, जो पेमरा का लॉ है, जो हम कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मीडिया आज़ाद हुआ था, वो एक्चुअली कोई आज़ाद नहीं हुआ था. तो जस्ट कि प्राइवेट मीडिया शुरू करने की इजाज़त दी गई थी एक कानून के तहत. उस कानून के अंदर जो मीडिया का सारा रेवेन्यू है और मीडिया इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी का जो तरीका है वो एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ है. सो मीडिया इंडस्ट्री की सर्वाइवल डिपेंड करती है इस बात पे कि कितनी आइज कॉर्पोरेट्स और एडवर्टाइजर्स समझते हैं कि उनके प्रोडक्ट को मीडिया लाके दे सकता है. वो इससे नहीं जुड़ा हुआ कि कितने लोग उनका प्रोडक्ट देख रहे हैं. यानी मीडिया को सस्टेनेबिलिटी के लिए अवाम की या आपकी और मेरी आंखों की जरूरत नहीं है, हमारी कंज्यूमरशिप की जरूरत नहीं है. मीडिया को सिर्फ कॉर्पोरेट्स को, एडवर्टाइजर्स को ये दिखाने की जरूरत है कि हम आपका इश्तिहार इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं. नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी डेलिबरेट थिंग, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया व्हील इन्वेंट किया था. पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, और जो मीडिया कंटेंट बनाता है उसके पैसे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं. हम जो कंटेंट, हमारे पैसे मीडिया को जाने के बजाय, कंज्यूमर्स के पैसे मीडिया को जाने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाते हैं. हम केबल ऑपरेटर्स को पैसे देते हैं, हम PTCL को पैसे देते हैं, हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे देते हैं. यानी टेक्निकली जो मीडिया इंडस्ट्री है और जो अवाम है उनका आपस में कोई फाइनेंशियल कनेक्शन नहीं है. तो मीडिया की अकाउंटेबिलिटी जो अवाम को होनी चाहिए, वो उससे जो आप बात करें क्रेडिबिलिटी की, वो उस तरह नहीं स्टैब्लिश हुई. सो दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक इशू. और उसकी ये जो सारी मसला है कि सेंसेशनलाइजेशन या ड्रामेटाइजेशन या क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा इश्तिहारात का ख्याल करना, ये सारा ले दे के फिर जुड़ जाता है कि मीडिया इंडस्ट्री पैसे किस तरह कमाएगी और रेवेन्यू किस तरह से कमाएगी. सो मुझे लगता है कि जब तक हम ये रेवेन्यू मेकिंग को और बिजनेस को एज डर्टी वर्ड्स नहीं कंसिडर करना नहीं छोड़ेंगे, और हम ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि इंडिपेंडेंस होने के लिए, क्रेडिबिलिटी होने के लिए ये भी जरूरी है कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मौजूद हो. जब तक हम ये बिल्कुल जो एट द रूट है इस पूरे मामले की, हम उसको भी टैकल नहीं कर सकेंगे. सो आई एग्री विद यू ऑन द पॉइंट कि क्रेडिबिलिटी मीडिया इंडस्ट्री इतनी लूज कर चुकी है. अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हम बिहेवियर्स देखते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे ऐसे ओनर्स भी देखते हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन ऐसी देखते हैं कि वो शायद जर्नलिज्म के बजाय उनके मुफादात अलग हों जो इंडस्ट्री के थ्रू पुश हो रहे हों. लेकिन ये सारी डिस्कोर्स वर्किंग जर्नलिस्ट के कंडक्ट के ऊपर होने के बजाय उन सिस्टम्स, उन खवानीन, उन तरीक़ेकार पे आई थिंक हम फोकस करना चाहिए जो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने हैं जहां मीडिया इंडस्ट्री को इन सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है. वो गलत है. ऑब्वियसली उससे कोई डेमोक्रेटिक वो सर्व नहीं हो रही जो वैल्यू सर्व होनी चाहिए. आवाम का नुकसान हो रहा है. लेकिन कसूरवार कौन है, इसके ऊपर हमें ज़रा देखना चाहिए कि ये क्या क्या वजूहात हैं. इट्स नॉट जस्ट ग्रीड. ये सस्टेनेबिलिटी, रोजगार और जर्नलिज्म की अपनी कॉस्ट का बहुत बड़ा मामला है which we keep missing out on. Amber, interesting point that sort of picked up on, which I want to push through, which is कि पाकिस्तान में by and large अमीर होना जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. You know, it's kind of a taboo कि कोई अमीर है. अच्छा, भी बहुत से बुरे भी होंगे, लेकिन बहुत से self made भी तो होंगे ना. There are so many people who are self-made rich people. So, you know, being rich is not really bad. Although यहाँ पे जरा सा एक होता है कि अमीर आदमी है तो गालिबन इसने चोरी ही की होगी, गालिबन डाका ही मारा होगा, गालिबन इसने कर्जे माफी कराए होंगे. So media, you know, so my question to you would be कि पिछले कोई 10, 12, 15, 20 सालों में there's been an explosion of media channels. One would have thought that with competition, the quality would go up. Of course, quality is a general word that I'm using. That didn't happen. Why did that not happen? One would have thought कि 50 सब चैनल्स होंगे, पहले एक था, 50 हैं या 60 हैं, तो शायद क्वालिटी बेहतर होगी,
credibility बेहतर होगी, professionalism, the word so that use बेहतर होगा, work ethics बेहतर होंगे. But that didn't happen, did it? Please correct me if it did happen. No, it didn't happen. और आप देखिए, मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 22 करोड़ हम कहते हैं ना, 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ लोग हैं और बहुत व्यूअरशिप है टेलीविजन की अभी भी. इसके बावजूद के क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं, वो भी लंबी बहस है जिस पे थोड़ा बहुत असद और सदफ ने बात की है. लेकिन आप मुझे बताएं कि इतने सारे न्यूज चैनल्स की क्या जरूरत है. अब आप 2018 से 2019 की बात करें तो आपको बता दें कि कोई 10 अरब के करीब आपकी रेवेन्यूज, एड रेवेन्यूज जो हैं कम हुई थी. ठीक है, 2020 के अभी आदाद शुमार मेरे पास नहीं है, लेकिन 2018 से 2020 कई वजूहात है उसके पीछे. मईशत का उस पे हाथ है, उस पे कुछ कदगनों की भी बात है, लेकिन रेवेन्यूज कम हुए थे. उसके बावजूद नए चैनल्स भी इसी दौरान खड़े हुए थे. उन्होंने सोचा कि इंतखाबात होंगे, लोग न्यूज देख रहे होंगे, तो नए चैनल की जरूरत होती है. ये नए चैनल्स जो बन रहे हैं, क्या ये प्रोफेशनल हैं? क्या इनके पीछे कोई, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 2-3 की बात करें कि जैसे डॉन टीवी हो गया तो एक डॉन ग्रुप है साथ, अगर जियो हो गया जंग ग्रुप है, दुनिया के भी अपनी अखबारात है वगैरह वगैरह. तो ये ज्यादातर इनके अपने क्योंकि बिजनेस के मफादात होते हैं, इनके अपने एजेंडाज होते हैं. और मैं ये भी मालूम है कि ये जो तफरीक हमें नजर आती है, जो डिवाइड नजर आती है मीडिया में, जो एजेंडाज कहते हैं, the media and media channels have become power brokers as well. या वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन चैनल्स के जरिए, या उनका अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म भी मुतासर होती है. तो अब हम जब देख रहे हैं कि एड रेवेन्यूज गिर रहे हैं, एड रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, नए चैनल्स, उसके बावजूद हमें इतनी जरूरत नहीं, हमें फिर से एक और टॉक शो की शायद जरूरत नहीं है. वो फिर भी बन रहे हैं और फिर भी नशर हो रहे हैं. फिर आप क्या समझते हैं, क्या मयार वही रहेगा? मयार वैसा नहीं रह सकता. और हमने ये भी देखा है कि पिछले 2 साल में जब मईशत के हालात बुरे रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको नौकरियों से निकाला गया है, चैनल्स बंद हुए हैं, अखबारात बंद हुए हैं. तो हालात ये हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जितनी ट्रेनिंग्स हुई है, जितना अरसा गुजरा है, जो टॉप 5 चैनल्स या 6-7 चैनल्स है वो वही के वही हैं जो 10 साल पहले थे. नए चैनल्स बहुत कम होते हैं जो कम एंड ब्रेक थ्रू. सो you also have to realize again, because credibility effect हुई है, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर खुलकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टेलीविजन पे बात नहीं हो सकती. और आपने जैसे व्हाट्सएप का जिक्र किया था, कोविड के हवाले से क्लिप्स देखे जाते हैं. there's lots of alternative YouTube channels जो लोगों ने, अब तमाम जो एंकर्स हैं मेरे ख्याल में मेरे अलावा, वो उनके अपने YouTube चैनल्स भी उन्होंने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पैसा भी है, मुस्तकबिल भी है, कुछ रेवेन्यू भी आ रहा है. नौकरी चली गई, क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी भी बहुत है ना, नौकरी चली गई तो चलें, यूट्यूब चैनल हमारे पास होगा. सो वी हैव सीन कि जो डिस्पाइट द इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ चैनल्स, द क्वालिटी hasn't increased because there's no interest in actual journalism. It's interest in the ad revenue, it's interest in agenda, it's interest in protecting your business. और मैंने देखा है कि 2-3 ऐसे 2 बड़े जो न्यूज मैगजीन्स थे, जो मंथलीज थे, जिनका शायद इस दौर में कोई काम नहीं था, लेकिन वो उनकी वैल्यू थी. अखबारात कम पढ़ते हैं लेकिन अभी भी उनकी वैल्यू है, क्योंकि अभी भी वहाँ स्टोरीज फिर भी हो रही हैं, कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हो रही हैं जो टेलीविजन भी पिकअप कर लेता है. सो बिकॉज एक आपके पास प्रोफेशनलिज्म का और एक रिसोर्स का क्रंच है, ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच भी है. तो ये भी हमने देखा है कि जिस तरह से कोविड-19 पे कवरेज होनी चाहिए थी, बहुत तफसील से बहुत कम हो रही थी. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी शायद लोगों की नजर से गुजर गई थी, और वो मुतबादिल मीडिया है या रिलेटिवली इंडिपेंडेंट मीडिया है जिनके पास रिसोर्सेज है, जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसी स्टोरीज कर रहे थे. तो न्यूज मैगजीन जो हैं 2 थे, हेरल्ड थे और न्यूज लाइन, वो बंद हो गए. वहां भी आपके पास डिटेल्ड लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म नजर आती है, जो बाहर भी हमने देखा है कि अखबारात जो हैं वो मकबूल नहीं रहे, कम पड़े जा रहे हैं, लेकिन उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म फिर भी थ्राइव कर रही है. सो आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज कि आपकी ट्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो खत्म हो रही है. असद, ऐसे लग रहा है कि मीडिया आपस में लड़ रहा है. मीडिया के बहुत से लोग क्रेडिबल नहीं हैं, कुछ होंगे भी. मीडिया बड़ा बहुत हो गया है, तो देयर इज अ बम्बार्डमेंट. Hopefully Amber will open her YouTube channel, बाकी सबने खोल लिए हैं. My question to you would be, मैं अगर सुपरमार्केट जाऊं और वहां पे एक टूथपेस्ट पड़ा हुआ है कि बस यही है, तो फिर तो बस वही है. लेकिन अगर 20 हैं तो उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं.
لیکن میڈیا کے چکر میں میری ذمہ داری ایز اے ویور کیسے یہ بن گئی کہ بھئی مجھے تلاش کرنا ہے سچ کو, کیونکہ آدھے جھوٹ بول رہے ہیں آدھے سچ بول رہے ہیں. Wasn't that the job of the media? I now have to be responsible for finding the truth out there. So what happened? Why aren't you guys, I mean generally the journalists, why can't you guys just speak the truth? So I don't have to use my judgment. I can just trust the television, for instance. اگر آپ کو یہ چاہیے تو پھر تو آپ پی ٹی وی کے واپس چلے جائیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس مجھے ایک جگہ سے بس ون ورژن آف دا ٹروتھ مل جائے تو پھر مطلب پی ٹی وی صحیح تھا اور آپ پی ٹی وی دیکھیں. لیکن اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں میرے ذہن میں, اینڈ سم تھنگ دیٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ ان میڈیا تھیوری ایز ویل از, or at least in my experience what I find is that when we're talking about the responsibility of the media and responsibility of the news media, we almost entirely take away half of the equation, which is the responsibility of the audience. Now, obviously, I'm not saying that it's the responsibility of the audience to go out there and do the journalism for the journalists, right? That's our job. Our job is to do good journalism. But the audience has a responsibility as well, because, and this speaks exactly to the point that you raised with Amber, کہ اگر ہمارے پاس تقریباً I think as of now 39 to 40 news channels یا کم از کم licenses of 39 to 40 news 24-hour news channels ہیں, اگر اتنے زیادہ ہیں تو کم از کم کہیں نہ کہیں تو کوالٹی ہونی چاہیے, right? Like based on capitalism, based on the market, there should be some form of competition. But it's a feedback loop, right? So, and what happens is the prime movers, the original movers, so Jio and a few others, right at the start, the die was cast then that we are going to go for sensationalism and we are going to go for Mirch Masala, because we don't want to take, because again, as Sadaf has mentioned, this is an expensive business. Running a television channel is no joke, right? It is extremely expensive to run the studios, to have the staff, to have everything. And you're risking a lot of that money. And so this is not just for Pakistan, you see this in India, you see this in any country, you see this in the States as well. Sensationalism sells because people watch it as entertainment. Interesting baat ye, or Adil, maybe you can speak to this specifically, or you'll have seen it happen in front of you, is کہ 2007 میں جب یہ یا 2006 میں جب یہ لبرلائز ہوا اور یہ پرائیویٹ چینلز آ گئے اور نیوز چینلز became these kind of sensationalist monsters, تو ہمارا default form of entertainment went from watching serials to watching the news shows. کہ 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک اب میں ٹی وی چینل پہ ڈرامہ نہیں دیکھوں گا, میں ٹاک شو پہ صحافیوں کو لڑتے ہوئے دیکھوں گا یا سیاستدانوں کو لڑتے ہوئے دیکھوں گا. And that even to this day remains our primary mode of television entertainment. So what's happened is once the market is set in that direction, it's very difficult to change it, and it's a high risk. So if a channel, let's say کوئی چینل آتا ہے اور وہ اپنے کروڑوں پہ کروڑ انویسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جو ہے ہارڈ کور انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کریں گے, ہم صرف سوبر رپورٹنگ کریں گے, جو کہ میرے according to me is the way it should be done. They're risking all of that money in a market that is not, the audience is not either primed for it and is not likely to respond to it, at least not to begin with. So ye wali baat I think is how we need to look at that market. The market has been set up in a certain way where journalism and objectivity or the ideals and the ethics of journalism are not the things that are valued. One of the other things that I do want to also point out is کہ جو Amber نے also alluded to کہ یہ long form جو ہمارے magazines تھے Herald اور Newsline وہ بند ہوئے and اس سے we have lost value. میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے جو پہلے ذکر کیا کہ جو ہمارے انگریزی کے اخبارات ہیں یا کوئی بھی اخبارات ہیں, کیونکہ ہماری لٹریٹ پاپولیشن کم ہے اور وہ لٹریٹ لوگ ہوتے بھی ہیں وہ پڑھتے نہیں اخبار, ان کی پھر بھی بہت زیادہ ویلیو ہے اور ایک بہت انڈر ریٹڈ یہ ایک اثاثہ ہے ہمارے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر روز جو بھی کچھ ہوتا ہے پاکستان میں کوئی اخبار کا رپورٹر اس کے بارے میں لکھے گا, کوئی بھی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گی اور وہ چیز اب ریکارڈڈ ہے. اب کل کو پرسوں کو 1 سال بعد کو اگر کوئی لیگل کیس ہوا, اگر کوئی کسی نے ریسرچ کرنی ہے, اگر میں کوئی اسٹوری کر رہا ہوں this is related to the idea of I don't know, let's say gender based violence, what am I going to do? The first thing I'm going to do is to go back through every single newspaper and find all the incidents, and they're all recorded. Now each individual story perhaps may seem insignificant and may seem that it doesn't have much value, and why should we bother with putting resources into covering it? But seen as a whole, journalism does a lot for this country. Can I just want to pitch in here? Yeah. Can I just pitch in here? Because I think it's important that we go back to newspapers. I just want کہ جو اسد نے بھی بات کی تھی اس کی ری-ایمفسائز کروں. مثال کے طور پر ایک اخبار میں چھوٹی سی خبر تھی, ایک لڑکی تھی جس کے غرض کے نام پر قتل اس کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بچ گئی تھی. چھوٹی سی خبر تھی اور وہ اندر کہیں صفوں میں گم ہوئی تھی. وہ میں نے پڑھی تھی, وہ میں نے اٹھائی, اس پہ میں نے BBC کے لیے اسٹوری بھی کی, اور اس کے بعد شرمین عبید چنوئی نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غیرت کے نام پر قتل پر قانون سامنے آیا. تو یہ ہے اخبار کی اہمیت اور وہ ختم نہیں ہو سکتی. بالکل.
You mentioned, both of you mentioned Herald and Newsline. I also want to mention two publications, Viewpoint. I don't know if you're familiar with that, and Pakistan Times. You know, since my grandfather and grandmother worked both of them, so it is important to continue publication. Sadaf, सवाल मेरा आपसे ये है कि Asad admitted that he's biased in favor of human rights. Okay, and we all understand that. पिछले 20 साल में एक और चीज निकली है, उसे कहते हैं डिजिटल राइट्स. अब ये किस बीमारी का नाम है? Do you have any idea what these are? What are digital rights? भाई किसी को अगर थप्पड़ मारा है तो उसको पर्चा करो, अंदर करो. ये राइट्स इंटरनेट के ऊपर कौन से राइट्स होते हैं? किसी को जो मर्जी कह दो यार, इस पे कौन सी कोई कानून लागू होता है या होना चाहिए? I think this is a very interesting question क्योंकि मैं अपने आप को डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी कहती हूँ. और जब मैंने ये शुरू किया था तो एक्चुअली आई हैड अ कन्फ्रंटेशन विद दिस टर्म, जो आप अभी जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स होते हैं. लेकिन अगर आप ये देखेंगे ह्यूमन राइट्स किसी भी स्टेट में ऑपरेशनलाइज होने के लिए कुछ क़वानीन बनाए जाते हैं, जिनके जरिए ये इंश्योर किया जाता है कि जो लोगों के हुकूक हैं वो उन तक पहुँचें और वो इनको मिलें. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में, सोशल, कल्चरल, लीगल, लेजिस्लेटिव हर इशू में हम एक ऐसी कौम है जो अपनी रिवायात से जुड़े और अपने पीछे माजी में जुड़े रहना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए बड़ा हिचकिचाते हैं. तो जो मेरा अपना डिजिटल राइट्स की टर्म के ऊपर कन्विक्शन आया था वो सिर्फ इतनी सिंपल सी बात पे आया था कि जो हमारा कानून शहादत है उसमें डिजिटल एविडेंस को उस तरह से नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था कि डिजिटल एविडेंस अगर के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है. शुरू में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी तो ये डिजिटल एविडेंसेस ये एक्सेप्टेबल नहीं होते थे क्योंकि उनकी प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं थे पिछले लॉज में एंड व्हाट नॉट. बट ये डिबेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ग्लोबली, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास इंटरनेट एक ग्लोबल फिनोमेना है. तो इंटरनेट की जो गवर्नेंस होती है, टेक्नोलॉजी की जो गवर्नेंस होती है, उसका तरीक़ाकार अक़वाम मुत्तहिदा यूएन के लेवल के ऊपर तय किए जाने की पिछले 10 साल से कोशिश हो रही है. तो उसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर यूएन के एक्सपर्ट्स काम करते हैं, जो स्पेशल रैपोर्टर्स होते हैं, उन्होंने 2006 में एक रिपोर्ट ये और एक रेजोल्यूशन सी जारी की थी यूएन की तरफ से कि जो इंसानी हुकूक का प्रोटेक्शन ऑफलाइन यानी रियल लाइफ में होता है वही इंसानी हुकूक इंटरनेट के ऊपर और वर्चुअल स्पेस के अंदर भी उसी तरह से कंसिडर किए जाएंगे. और अब डिबेट इस बात पे चल रही है ग्लोबली कि जो इंटरनेट तक रसाई है और टेक्नोलॉजी तक रसाई है ये इटसेल्फ एक ह्यूमन राइट होना चाहिए, क्योंकि उसके ना होने से डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. सो जो डिजिटल राइट्स की पाकिस्तान में डिबेट है वो अभी तक जो ज़्यादा जिन पैराओं में डिस्कस होती है आपको नजर आएगी वो एक इज़हार राय, आज़ादी इज़हार राय, और दूसरा जो प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट है डिजिटल स्फीयर में. ये दो चीज़ें पाकिस्तान में जो कम से कम इंटरनेट राइट्स की डिबेट है उसके ऊपर अभी ज़्यादा फोकस्ड है. ये मैं बता दूं कि ग्लोबली ये डिबेट अब इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है. अब जो बाहर की कंट्रीज में बातचीत हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी इम्प्लीकेशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर, या जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है उसकी इम्प्लीकेशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर. सो वो डिस्कशन बहुत बढ़ चुकी है आगे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक दोनों तरह से बात है ना कि एक तो कवानीन भी नहीं मौजूद, दूसरे जो हमारी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक है और जो हमारे अवाम हैं, सिविक राइट्स के अंदर ही जो शहरी फराइज होते हैं उनके अंदर ही हमें बड़ा ज़्यादा लैक नज़र आता है. इंटरनेट के ऊपर ये जो लैक है, जो फुकदान था अपनी जिम्मेदारी माशरे की तरफ कबूल करने का, वो हमें ऑनलाइन एम्पलीफाई होता हुआ नजर आता है. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि चलो अगर हमने सड़क के ऊपर किसी को मारा या गाली दी तो फिर भी शायद कोई इम्प्लीकेशन आ जाए, लेकिन जब हम ऑनलाइन करते हैं क्योंकि हम स्क्रीन के पीछे हैं, ज़्यादातर हम अपना रियल नेम भी इस्तेमाल नहीं करें, एक एनोनिमिटी है, तो आप कुछ भी कह दें, किसी भी तरह बात कर दें, और ये सिर्फ गालियों तक महदूद नहीं है. अगर आप इवन सपोर्ट ग्रुप्स पे देखें, सपोर्टिंग फोरम्स पे देखें, तो किसी के घर में कोई मामला हो, कोई मसले मसाइल हो, इन रियल लाइफ हम अच्छे तरीके से सॉफ्ट अपने बात को कवर करके कि दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल करके उन्हें मशवरा देते हैं. ऑनलाइन वो मशवरे भी इतनी हार्श अंदाज में दिए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें, एक तो डिजिटल राइट्स भी और डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी आई थिंक अब हमें पाकिस्तान में कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की. वो दोनों चीज़ें कानून के अंदर, माशरती रवैयों के अंदर हमें दोनों तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आनी चाहिए. क्योंकि जैसे शुरू में अंबर कह रही थी कि इवन जो अगर आप मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें
تو اب سٹیزن جرنلزم کا جو رول ہے, سٹیزن وٹنسز کا جو رول ہے, اس کا جو جرنلزم کے اندر سارا معاملہ ہے, وہ ساری چیزیں بھی جو جرنلزم اوور آل ہے اس کی شیپ کو چینج کریں گے. انفارمیشن اکانومی ہے, نالج اکانومی ہے, تو اس کے اندر ان ساری چیزوں کو, ٹیکنالوجی کو دیکھنا, اور پھر یہ دیکھنا کہ ایک تو ٹیکنالوجی تک رسائی سب کی کس طرح, لائک اس میں ڈیموکریٹائزیشن کس طرح سے آئے گی, اور پھر جو لوگ موجود ہیں آن لائن جو استعمال کرتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کس طرح سے ہوگا. یہ ایک کائنڈ آف پیرایا ہے جس کے اندر ہم ڈیجیٹل رائٹس کو دیکھتے ہیں. مجھے اس لیے اس کا کچھ اندازہ ہے کیونکہ 2-3 سال پہلے میں نے ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کر دی جو 5 منٹ کے بعد میں نے ڈیلیٹ کی اور معافی مانگی. تو وہ ڈیلیٹڈ ٹویٹ تو کسی نے تصویر کھینچ لی, معافی اب تک موجود ہے, اور اس کے بعد مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں چلی 3 دن, اور سائبر کرائم جو تھا, جو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو مجھے معلوم بھی نہیں تھا وہ کون ہے, and I had to hide for 20 days and then shut down my account permanently. So what I'm saying is I am one of the victims of that. خدا جانے کہ لوگ کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں. تو بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. امبر, مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے. There's a very bad example that's coming to my head, but I know people will get it. In the 1942nd World War میں نازی جرمنی تھا, ان کا ایک پروپیگنڈا منسٹر تھا, his name was Goebbels, I think it's that how you pronounce it, جو پوری اس نے جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ تھا وہ شفٹ کرتا رہا تھا کہ فلم کون سی چلے گی اور براڈ کاسٹنگ کیسی ہوگی اور نیوز کیا چلے گی. سو یو نو ہی واز اے ویری ویری کلیور پروپیگینڈسٹ اف دیٹس ورڈ. میں نے مثال اس لیے دیا آپ کی, ہرگز اس کی تعریف میں نہیں میں کہہ رہا, نہ نازی جرمنی کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب کووڈ-19 ہوا یا فلڈز آتے ہیں تو سڈنلی میڈیا کی رسپانسبلٹی شفٹ ہو جاتی ہے, یہ ہونی چاہیے, ویئر وی کین سیو لائفز اور وی کین کمیونیکیٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وی نیڈ انٹیلیجنٹ کمیونیکیٹرز, وی نیڈ انٹرسٹنگ کریٹو کمیونیکیٹرز آن دا میڈیا جو اس طرح کمیونیکیٹ کریں میسج کہ وہ پہنچ جائے, اور ہم تو بالکل پرانے زمانے کی طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اٹس ویری بورنگ, اٹس ویری ڈرائی, it's very fact oriented and it's ineffective. That's my view, that's my opinion. How would you respond to that? So یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ جو ٹیلی ویژن اور مین اسٹریم نیوز چینلز ہیں اور ٹاک شوز ہیں اور جو سارا سیاسی مواد ہے, اب یہ صرف ایک خاص عمر کے لوگ دیکھتے ہیں جو شاید ریٹائر ہو گئے ہیں, جن کے پاس وقت ہے, جو تھوڑا سا ابھی تک سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں. Younger audiences are not watching us and that is a big gap. آپ نے جو بات کی انٹرسٹنگ کریٹو کمیونیکیشن, ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہی ان کو وہی پسند ہے, جیسے اسد نے کہا تھا, جو پہلے سے دیکھتے آئے ہیں. You know, I've experimented by the way myself in a slightly different kind of show and you know that experiment failed, to be honest. So میرا خیال میں کہ اب جو آپ کریٹو کمیونیکیشن کی بات کریں وہ اب ڈیجیٹل میں ہے, وہ اب آپ کو ٹیلی ویژن میں فی الحال تو نظر نہیں آئے گی. ایک چینل ہے مجھے معلوم ہے, میں نے وہاں کام بھی کیا تھا, انہوں نے کوشش کی تھی, سوچ رہے تھے ینگ لوگوں کو ہم کریں, لیکن وہ بھی نہیں کر پائے کیونکہ پیسہ لگانے کے لیے لوگ نہیں چاہتے, ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, اپنے چینل کے پلیٹ فارمز ہیں, ان کی انٹیگریشن نہیں کر سکتے. تو وہ ایک پرانے ڈائناسور والی سوچ ہے جو ابھی تک چل رہی ہے. ڈائناسور سے مطلب میرا ہمارے ہاں تو 15 سال پہلے, لیکن اگر ہم مغرب کے حساب سے دیکھیں تو 50 سال پہلے کی سوچ ہے. سو that you won't find on television, but I think some of that creative stuff you can see on digital and YouTube and people are experimenting. تو ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں رہا. جہاں تک آپ فلڈز کی بات کر رہے ہیں, میں خالی فلڈز کی جو 2010 کی کوریج تھی بہت تھرو تھی, بہت انٹینسو تھی. اور دیکھو ٹیلی ویژن کا کیا کام ہوتا ہے, اور جو سب سے زیادہ افیکٹو ٹیلی ویژن خاص طور پہ جب قدرتی آفت آتی ہے یا وبا پھیلتی ہے جیسے کووڈ-19 ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو دکھائیں کہ یہ صورتحال ہے. فلڈ میں تو افیکٹو یہ ہے نا کہ یہ دیکھو یہ گاؤں ہے, یہ ٹوٹ پھوٹ کیا ہے, لوگ کتنے مشکلات کا شکار ہیں, یہاں ابھی تک راشن نہیں ملا, کوئی بھی حکومت سے آیا نہیں, ملا نہیں ہے, ان کی 2 باتیں سن لیتے ہیں. کووڈ-19 میں کیا ہے, کووڈ-19 obviously اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات تھی وہ تھی information and correct information about how to prevent it. And I think a lot of channels did a very fine job. They got you know infectious disease experts تھے جو مجھے پتا ہے کہ کم سے کم 2 مہینے وہ تقریباً ہر بڑے چینل پہ, اچھے چینل پہ اینکرز کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے اور بتاتے تھے اور سمجھاتے تھے. پھر آپ کی اپنی گورنمنٹ کی کچھ میسیجنگ تھی, ان کی اپنی پریس کانفرنسز تھی, تمام جو صوبے تھے ان کے وزرائے اعلیٰ یا ان کے ترجمان تھے وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے اور صحیح کرتے تھے, وہ غلط تھے, وہ الگ بات ہے. تو جو میڈیا کر سکتا تھا اس نے تو کیا,
آگے آپ کریٹو کمیونیکیشن کی بات کریں تو یہ صحافیوں کا کام نہیں. صحافیوں کا کام ہے کہ آپ کو فیکٹس بتائیں, حکومت کا پوائنٹ آف ویو دکھائیں, اس کا پوائنٹ آف ویو دکھائیں, and that's pretty much it. Asad, 10 years from now, 5 years, 20 years, I don't know, whenever. امبر سیٹ کہ جو کریٹو کام ہے وہ ینگسٹرز کا ہے, جن کا بھی ہے. صحافیوں کا کام یہ ہے کہ بھی وہ بات جیسے ویسے پہنچائے. سو جس طرح کی سینسیشنلزم ہمارے ملک میں, اور perhaps شاید باہر کے ملکوں میں بھی ہو, تو I don't know, in the next 10 years, nobody would care about journalists, or would we? سو ہر نوجوان بچہ جو ہے اس کا یوٹیوب چینل ہوگا, جرنلسٹ کا تو ہے ہی, تو امبر would perhaps be the last journalist. تو وہ بھی اس کے اوپر اپنا کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے, پھر نئی نئی میمز بن جائیں گی. I think we are the best in making memes on the planet. We are the greatest nation who can make memes, because that's perhaps all that we make. اس کو ہم کسی طرح سے ایکسپورٹ کریں نا, we should export them. So maybe the formal media, television, who would watch Dawn and Sama and whatever? Who would watch that? I think Amber is, I think Amber is, sorry to cut you off, but I think I got the crux of the question. I think Amber has hit upon this exactly right. Is کہ دو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں, they're definitely the demographic skews older, and younger people are not watching the news, or at least they're not watching it in the same way. شاید وہ فیس بک کے اوپر اگر کوئی کلپس آتی ہیں, ٹویٹر کے اوپر کلپس آتی ہیں, وہ اس کو دیکھ لیں, they might consume it that way, and increasingly even like the youngest generations are moving even away from those platforms. So Facebook and Twitter now are actually, old media, and you're moving towards things like Snapchat and Instagram and TikTok and all of these other things. TikTok is a extremely interesting and sometimes problematic, but a very interesting space as well for these kinds of things. Now اب دو سوال آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امبر کا سوال بالکل صحیح ہے, اور ان کا آئی تھنک پوزیشن بھی صحیح ہے کہ دیکھیں ہم صحافی ہیں, ہمارا جاب یہ ہے کہ ہم نے اسٹوریز کو نکالنا ہے, ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا, ہم نے ان کو رپورٹ کرنا. لیکن I am very aware of the fact کہ while I also look at my work in that way, کہ اگر اس کام کو کوئی پڑھے نہیں تو پھر اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی I'm not talking about my byline, I'm not saying کہ میری اہمیت کم ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ میں کوئی بہت امپورٹنٹ اسٹوری ہے, جو مجھے لگے کہ بہت امپورٹنٹ اسٹوری ہے, اس کو میں کور کروں, اس کے اوپر میں مطلب ہفتے پہ ہفتے لگاؤں اور سب کچھ کروں, اور اینڈ میں جا کے اگر, کیونکہ جس طرح سے اس کو ڈسیمینیٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے اس کو پبلش کیا جاتا ہے, موسٹ آف مائی ورک از آن دا ویب ان ٹیکسٹ اینڈ فوٹوز فارمیٹ, فرض کریں کہ کوئی نہیں پڑھتا, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کے لیے بھی آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی اوپن, اور میرے آرگنائزیشن میں ہم عام طور پہ یہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی اسٹوری ہوتی ہے, کوئی بڑی اسٹوری ہوتی ہے, something that is really big and breaks the mold, we will then have an internal conversation about کہ اچھا اس کو کس طرح سے, how do we package it for different platforms, and then the journalist is part of the conversation کہ اچھا دیکھیں اگر ہم اس کو Instagram پہ ڈالیں تو اس کے لیے تصویریں یا ویڈیوز آپ ہمیں کچھ ورٹیکل فارمیٹ میں دے سکتے ہیں, آپ ہمارے لیے اسکرپٹس لکھیں. تو ہم جب فائل کرتے ہیں, Amber used to do this at BBC Urdu, I know all the time, every story she filed was in like probably 6 different formats. It wasn't just a TV story, right? Or it wasn't just an online story. So wo, I would say کہ ہماری responsibility ہے. We need to be open to that. Not that it's our primary job. I think there need to be people in every news organization that have their finger on the pulse and that are willing to work with journalists in order to make sure that that information gets disseminated. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جس طرح سے ہم ابھی جا رہے ہیں, تو مطلب جرنلسٹ ڈیفینیٹلی ایک انڈینجرڈ اسپیشیز, اسپیشلی پاکستان میں تو بنتے چلے جا رہے ہیں, اسپیشلی بیکاز آلسو جو مطلب یہ ایک میری, اینڈ اگین I know we keep apologizing to Amber about this, but like I have a particular pet peeve, which is کہ پاکستان میں جو بندہ ٹاک شو ہوسٹ ہے اس کو صحافی بولا جاتا ہے. Now some talk show hosts are journalists, but not all talk show hosts are journalists. In fact, most are not, right? Most are essentially just sitting there and spouting opinion and making people sort of like, I'm not saying it's not an important role to play in the news media, but it's not journalism. It's something else. It's a version of opinion. اب اس کو اتنا کنفریٹ کر دیا گیا ہے کہ میرے خیال سے I don't think that young people coming up now, even people who are coming at journalism from a rights-based perspective, میں جب younger journalist سے ملتا ہوں, وہ بھی ایک بہت agenda driven سائڈ سے آتے ہیں کہ دیکھیں میں تو بہت opinionated ہوتی ہے ان کی رپورٹنگ. جیسے میں نے بولا کہ فرض کریں کہ میری اگر if my choice of subjects is biased towards subjects that have to do with human rights, or I take a pro-human rights stance towards my approach to a subject, that doesn't mean that I don't portray everything fully, right? Even the people who are arguing against the fact. So for example, اگر enforced disappearances کی اگر ہم بات کریں تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا کہ میں جو لوگ enforced disappearances کرتے ہیں ان کو اپروچ نہ کروں کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں, یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو اپروچ نہ کروں, تو پھر بولیں گے کہ دیکھ پاکستان ایک جنگ میں ہے اور enforced disappearances کی بہت ضروری چیز ہے.
ये भी पोर्ट्रे करना जरूरी है, राइट? बट इन यंग जर्नलिस्ट से मैं मिलता हूँ, दे आर मच मोर लाइक opinionated talk show hosts than they are like actual reporters, or many of them. I would obviously, I can't condemn an entire generation, not fair. असद, इस मुल्क में हर शख्स क्रिकेट का एक्सपर्ट है, पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, सियासत का एक्सपर्ट है, हर चीज, मजहब का एक्सपर्ट है, हर चीज का एक्सपर्ट है. हमारी तो जरूरत नहीं है यार. एविएशन के भी एक्सपर्ट बन गए थे. we are experts, period. Of everyone is an expert on everything. What is so difficult to understand here? सदफ, ये जो जिस जानवर का जिक्र किया अंबर ने शुरू में कि ये एक गाय है बहुत बड़ी सी, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की, अच्छा भाई ये उसका सींग है, ये कान है, ये मुंह है, ये पूंछल है. मुझे ये बताएं, do you think there are any glaring gaps between the ecosystem of media today? If there is there any way that we can bridge that gap, या ये पॉकेट्स में ही सारे लोग काम करते रहेंगे, जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं और यंगस्टर्स अपना काम कर रहे हैं और कोई सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम करते जा रहे हैं और कोई कोहेरेंस नहीं है. there's no way. Is there any way we can bring them together on some table? I think gaps क्या, I think the whole industry is fractured and उसके अंदर I think थोड़ी सी perception का भी issue है. जब हम मीडिया राइट्स की बात करते हैं या हम आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, तो एक बहुत डेलिब्रेट मुझे लगता है या स्ट्रक्चर्ड एक नैरेटिव ये बनाया गया है या बन गया है, आई डोंट नो, कि अवाम एक साइड पे है और मीडिया एक साइड पे है और हुकूमत एक साइड पे है. यानी जो मीडिया के हुकूक हैं या जो सेंसरशिप की हम बात करते हैं, ये इवन जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो मीडिया वो इन हुकूक को अपना हक जानने के बजाय ये समझता है कि ये कोई एक प्रिविलेज अलग से क्लास है और ये जो बातचीत हो रही है ये इनके बारे में हो रही है, हमारे बारे में नहीं हो रही. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट गैप, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और मीडिया के अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एंड जो भी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, जो सर्व करने की बात हो रही है, जो ड्यूटी की बात हो रही है, वो टूवर्ड्स अवाम है, और अवाम भी ये समझे कि जो मीडिया के ऊपर काम किया जा रहा है, जो रिपोर्टिंग हो रही है, वो मीडिया की अपने लिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही, वो अवाम के लिए, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए वो रिपोर्टिंग हो रही है. सो ये जो अलायंसशिप है बिटवीन पब्लिक एंड मीडिया इटसेल्फ, रिकग्निशन इस बात की कि जो आज़ादी इज़हार राय है या जो सहाफ़त की आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस है, ये प्रेस का हक नहीं है, ये अवाम का हक है एसेंशियली. क्योंकि उनके ना होने से जो मसला है वो सिर्फ मीडिया लाइक हम तो पॉपुलेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है ना, और जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है वो फिर भी लिमिटेड है. ठीक है, नौकरी चली जाएगी या मार देंगे या जो भी, लेकिन इसका जो बहुत बड़ा जो मेजर इम्पैक्ट है वो ये है कि जो अवाम है वो अनअवेयर रहते हैं. अवाम को ये नहीं पता होता कि किन चीज़ों की बुनियाद पर वो पॉलिटिकल फैसले करें, वो किन चीज़ों की बुनियाद पर वोट दें, क्योंकि ये गालम गलोच एंड दिस इज जस्ट हॉग वॉश, ये सारा इसके अंदर मटेरियल नहीं है, जो सब्सटेंस नहीं है बिल्कुल भी. और एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन बायस है. सबको पता है कि कौन सा चैनल पीटीआई के साथ खड़ा है, सबको पता है कि कौन सा चैनल किसी और के साथ खड़ा है, और जो उनके हामी है वो वही चैनल्स देखते हैं. सो जब तक अवाम ये नहीं समझेंगे कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगा और वो उसके लिए पुश करें, जब तक अवाम की जानिब से, व्यूअर्स की जानिब से ये डिमांड नहीं आएगी, मार्केट ये डिमांड नहीं करेगी कि हमें एक ओवरऑल सिनेरियो पेश किया जाए, वो सिर्फ कंफर्मेशन बायस के पीछे नहीं जा रहे हों, जब तक वो डिमांड ना नजर आए हमारे अंदर, उसकी रिफ्लेक्शन हमें मीडिया पे नहीं नजर आएगी. सो ये जो एक फ्रैक्चर है ना कि पॉलिटिशियंस भी खड़े होकर मीडिया को गालियां दें, अवाम भी बैठ के मीडिया को गालियां दें, और मीडिया अपना आपको पोजीशन करे इधर एज अ विक्टिम और एज अ फाइटर और व्हाटएवर, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू एंटिटीज, ये बहुत अजीब और गरीब सा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है. एंड आई थिंक दिस इज डिसफंक्शनल ऑन एवरी लेवल, क्योंकि जर्नलिज्म क्या है, सहाफत क्या है, टॉक शोज क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ये डिबेट्स ओवर पावर करती हैं एक्चुअल डिबेट को. और वो डिबेट ये है, क्या मीडिया इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, क्या मीडिया इंडस्ट्री की फाइनेंसिंग, क्या मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बैठे लोग, उनकी ओनरशिप कंड्यूसिव हैं एक ऐसी सहाफत के लिए, एक ऐसे मीडिया के लिए जो एक्चुअली डेमोक्रेसी को सर्व कर सके. और अगर वो नहीं है तो जो चेंज है वो थ्रू रिग्रेसिव लेजिस्लेशन आएगा या पीटीवी की तरह एक नैरेटिव बिल्ड करने के थ्रू आएगा कि प्रोफेशनलिज्म यही है कि अच्छी अच्छी बातें करो.
یا وہ عوام کی طرف سے جب ڈیمانڈ آئے گی کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے میڈیا کی, ایسے انڈیپینڈنٹ میڈیا کی جو ہمارے انٹرسٹ کو سرو کر سکے, جو عوام کے انٹرسٹ کو سرو کر سکے, پبلک انٹرسٹ کو, ڈیموکریسی کو سرو کر سکے, آئی تھنک جب تک چینج نہیں ہوگا. جنرل مشرف کی آپ نے شروع میں بالکل بات کی تھی, ایک جو ہم بڑا کریڈٹ دیتے ہیں نا کہ پیمرا لا بن گیا تھا, اس کی ہسٹری میں اگر آپ جائیں, پاکستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک ٹرانچ دینی تھی بہت بڑے لون کی. اس کی کنڈیشنالٹی یہ تھی کہ جب تک ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے قوانین موجود نہیں ہوں گے, جب تک وہ بینک لون پروسیس نہیں ہوگا. سو ایکچولی اے ڈی بی کے بینک لون کی وجہ سے جو آر ٹی آئی کے قوانین تھے, انیشیل فیڈرل کا جو قانون تھا, اور پیمرا لا اور پاکستان پریس کونسل کا جو لا تھا, یہ تینوں لاز اس لیے بنے تھے. سو اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو ایکچولی جو ڈبیٹ تھی وہ بھلے ایکسٹرنلی شروع ہوئی ہو, اے ڈی بی کے پریشر پہ شروع ہوئی, لیکن ڈبیٹ شروع اسی بات سے ہوئی تھی کہ عوام کے پاس ٹرانسپیرنسی کا ذریعہ نہیں ہے. تو جب تک عوام اس کو ٹرانسپیرنسی کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے, آئی تھنک یہ فریکچر رہے گا, اور پھر ظاہر ہے میڈیا کی رسپانسونیس بھی پھر اسی طرح رہے گی. امبر, یہ اندیشہ ہے اسد کو کہ بہت سارے ایسے ہوسٹس ہیں جو جرنلسٹ نہیں ہیں, یہ ان کو اندیشہ نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ بہت باوقار جرنلسٹ ہیں. I had another question, but what Sadaf mentioned, مجھے اس سے ایک اور خیال آیا, کیا پیمرا کا یہ قانون نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے جرنلزم کی, ماسٹرز کی, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایز اے جرنلسٹ نہیں آ سکتا. جب ڈاکٹر MBBS نہیں ہے تو وہ آپریشن نہیں کر سکتا اپینڈکس کا, جب وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو دل کا آپریشن نہیں کر سکتا. تو ٹیلی ویژن پہ پھر کوئی جرنلسٹ بن کر کیوں آ سکتا ہے اگر اس کے پاس ڈگری نہیں ہے؟ Shouldn't we have this law, or do we have this law? No, we don't have this law, and I think it's completely unnecessary. کیونکہ آپ ڈاکٹرز کی بات کریں تو وہاں تو ظاہر ہے موت اور زندگی کا سوال ہے نا. صحافت میں بہت سارے لوگ آئے, بہت اچھے صحافی ہیں جنہوں نے صحافت پڑھی نہیں, انہوں نے کام کیا, انہوں نے سیکھا اور وہ صحافی بن گئے. مطلب دیکھیں, اب ٹیلی ویژن ہوسٹ کو کیا صحافی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, مطلب میں اپنی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں, جسٹ ٹو بی کلیئر بٹ ویئر آئی ایم کمنگ فرام, وچ از ایکچولی میں I was a reporter and I've been a producer and I've been on the desk for many years. Print سے میں نے شروع کیا تھا, broadcast میں چلی گئی, پھر ملٹی میڈیا میں, کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ that's where the future is. So I obviously have a journalism background and I actually do have a master's in mass communications. مگر ضروری نہیں ہے, میں بہت سارے اچھے رپورٹرز کو جانتی ہوں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے, انہوں نے سیکھا ہے, ان کے مینٹورز تھے. ایک طرح سے آپ دیکھیں جیسے ایک زمانے میں جب آرٹس میں آپ دیکھتے تھے کہ وہ ایک ورک شاپ ایک ہوتی تھی نا آپ کی, there's a, sorry, what do they call it, you have these mentors and you learn on the job. So that's how it happens. I don't think a degree is absolutely necessary, but experience is absolutely necessary. وہ آپ کیا انشور کر سکتے ہیں یا نہیں انشور کر سکتے, it really depends on, you know, obviously who's hiring and who's not, it doesn't matter. ان کے لیے کیا اہمیت ہے کہ جو اچھا سوال پوچھ سکتا ہے, جس کو سمجھ ہے, جو تحقیق کرنا جانتا ہے, جس کے تعلقات ہے, جس کے ذرائع ہیں, سورسز ہیں. I mean, does that matter or doesn't it? Or is, when you're coming on television, is it how you look, how you present yourself, are you charismatic, and you ask, are you a bit of a showman? So I mean, it really depends. I don't think there should be any bar in any way, because بہت سارے اچھے ایسے لوگ ہیں جو ہوسٹ بن جاتے ہیں who might not have had a journalism background, and it's perfectly all right, it's perfectly acceptable. Okay. If I can just jump in here as well. Sorry, just for a second, Adil. If I could just jump in, and yeah, I mean, I completely agree with what Amber is saying. Is ke, you know, the idea of saying ke wo log sahafi, my point is that journalism should not be exclusionary, right? Journalism should never be based on putting up barriers towards people coming into the industry. In fact, it should be quite the opposite. Or jaise Amber ne bola, probably the best journalists that I know never studied journalism, never had anything to do with it in their studies or anything like that. Maine khud electrical engineering padhi hai or anthropology padhi hai. I mean, I never studied journalism or anything to do with it. So I mean, I think that actually brings a much better perspective. اگر آپ کسی اور چیز کو پڑھ کے جرنلزم کی طرف آئیں تو آپ کا جو analytical approach ہوتا ہے وہ بہت زیادہ different ہوتا ہے, and that's something that, like, I don't think that these bars, میں نے تو مزاحیہ بھی یہ بولا تھا کہ کافی حد تک یہ جو ٹاک شو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتے, but I didn't mean it in the sense, and I guess to qualify the statement کہ وہ reporters نہیں ہوتے, they're not news gatherers. They are in a different realm. They're in an opinion realm. They're in a realm of guiding conversations around policy, and that can be done in very good ways, in the ways that, for example, Amber does. And it can also be punished by the industry that she's in, as she said, you know, when she tries to experiment with different types of shows that perhaps might be further towards the investigative or the news reporting side.
the TRPs come back not so great, and then suddenly, the whole experiment is pulled. So, खैर, I guess कहने का मकसद तो सिर्फ ये है कि हाँ, journalism को कभी exclusionary नहीं होना चाहिए. सदफ, ये दोनों तो डिग्री नहीं लगाना चाहते जर्नलिज्म पे. प्लीज गिव मी अ वोट. डिग्री लगाएं और नॉन जर्नलिस्ट को बाहर. आई एम टेलिंग यू. नहीं, देखिए, डिग्री लगाने आपके लेजिस्लेटर्स बीए नहीं करना चाहते, आप जर्नलिज्म पे टेक्निकल डिग्री लगा. यार नकली डिग्री लगा दे. डिग्री होती है असली होके. डिग्री Okay, one last question for everyone. Go ahead, Sadaf. You finish it. I think what's important जो अंबर ने बात की ना, डिग्री ना होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए. मैंने शायद अच्छे जमाने में स्टार्ट की थी जर्नलिज्म. मैंने 2002 में स्टार्ट की थी जर्नलिज्म. बहुत अरसा हो गया. तो 2 साल आप एज इंटर्न सर्व करते थे. आपकी बायलाइन नहीं जाती थी. देयर वर एडिटोरियल चेक्स. जब आप लिखते थे तो सिर्फ वो चेंज होके नहीं जाता था, उस पर आपको नोट्स मिलते थे और आप समझते थे. एंड देन यू इम्प्रूव पीस बाय पीस. सो जो हमें क्वालिटी का फुकदान नजर आ रहा है वो इसलिए नहीं कि जर्नलिज्म की एजुकेशन नहीं है. वो क्वालिटी का फुकदान इसलिए है कि जो हमारा न्यूज़ साइकिल बन गया उसमें रिसोर्सेज की इतनी कमी है, उसमें मेंटर्स की इतनी कमी है कि इवन जो मेरे पास, जब मैं इस काबिल हुई कि मैं इंटर्न्स रखूं, तो वो बेचारा पहले दिन आएगा और उसको आप पहले दिन असाइनमेंट देके सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे. दैट्स नॉट अ वे टू लर्न. लेकिन एज प्रोड्यूसर्स हमारे पास उससे ज्यादा वसाइल मौजूद नहीं होते थे. तो जो मसला आ रहा है ना प्रोफेशनलिज्म का, ये बहुत ज्यादा वसाइल से कनेक्टेड है. जर्नलिज्म की डिग्री बिल्कुल आई विल डिसएग्री विद इट, बट ये टेक्निकल स्किल्स को बिल्ड करने का जो वो है, जो हमारा एक कल्चर था, वो रिवाइव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फैक्ट चेकिंग किस तरह से होती है, जर्नलिज्म है क्या, सिर्फ जाके लोगों पे चीखना या इस हर चीज इस बात पे कि ये करना चाहिए हुकूमत को, वो करना चाहिए हुकूमत को, जो मेरा बड़ा पेट पीव है. ये सारी टेक्निकलिटीज, निटी-ग्रिटीज के बारे में सिखाना जो हमें मौका मिला था सीखने का, वो अब के जो बच्चे आ रहे हैं फील्ड में उनको नहीं मिलता. और फिर मैं बस यहाँ एक ऐड कर दूं कि अब बच्चे जो आ रहे हैं, जो इंटर्न आ रहे हैं, वो भी कहते हैं हम एंकर कैसे बन सकते हैं. I'm telling you, put a degree barrier here. You're not just listening to me. Nobody's listening to me. Okay, one last question. तो यार आप हम तीनों को फिर आप निकाल दे जर्नलिज्म से. No, I have a degree. हाँ, अंबर बच जाएगी. Degree application starts 2025 on. Retrospect. Okay, one last question. We're out of time. I mean, for all three of you, one by one, and one sentence answer. Okay, so there's a magic lamp that you have, and the genie comes out and asks Amber, कोई एक चीज पाकिस्तानी मीडिया के बारे में जो आप मुझे हुक्म करें कि मैं ठीक कर दूं. What would you wish for, Amber? Oh, there's so many wishes, only one. At the moment, given the circumstances, I would like diversity and less censorship. Okay, less diversity of voices. Diversity of voices. Okay. Hillary Clinton lost elections when she said, "Let's celebrate our diversity." That cost her the U.S. elections. Asad, one thing that you want to change about the media, what would you tell the genie? I'm going to assume, for the sake of this thought experiment, that the genie has already granted Amber's wish, so then I get an extra. This is my second wish. I would like us to move towards a model where our journalism is less based on the idea of power broking and the idea of being a power center, and more based on empiricism and the cores of actually what journalism is, which is to describe the world around you and to not necessarily do it in a prescriptive way, but to bring us back down to what journalism really should be. Okay, excellent. Sadaf, same question and same genie. Again, अगर अंबर और असद की विशेष पूरी हो गई हैं तो कुछ बचा नहीं है. क्योंकि अगर इकोनॉमी फिक्स हो जाए और अप्रोच वो हो जो असद कह रहे हैं, डाइवर्सिटी हो, I think we'll have a perfect mix. Excellent. This has been a wonderful session. So much. Thank you so much, Amber, Asad, and Sadaf. Thank you so much for your insight, for your information, for your knowledge. And those of you who are watching, thank you for watching. Stay indoors, stay safe, and all of you, Khuda Hafiz, Pakistan Zindabad.